Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we are starting a very inspiring chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. ये चैप्टर हमें करेज, फ्रीडम और इक्वलिटी का रियल मीनिंग सिखाता है. Okay, this lesson describes the historic day of 10 May 1994 when South Africa finally celebrated the end of apartheid. Apartheid यानी रंगभेद. Okay, a long period of racial separation and injustice. On this special day, Nelson Mandela took the oath as the first black president of South Africa. The ceremony was held in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria. Okay, on a bright and beautiful autumn morning, ये दिन एक नए एरा की शुरुआत था. ठीक है, होप, पीस और यूनिटी का. The day symbolized a new beginning for the nation, a future built on equality and harmony. And through this chapter, we learn about Mandela's vision, his struggles, and his dream for a free country. Okay, so let's begin this amazing chapter and understand the message hidden behind this historic moment. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. So now let's talk about Mandela's historic inauguration. Okay, a moment that changed South Africa forever. On this day, Nelson Mandela officially became the first black president of the country, ending centuries of racial injustice. He was supported by Thabo Mbeki and Mr. de Klerk, who took oath as deputy presidents. Representatives from over 140 nations came to witness this powerful moment. ये बहुत बड़ी बात है. 140 देशों से लोग इकट्ठे हुए थे इस सेरेमनी के लिए. ये इतना बड़ा इवेंट था कि पूरी दुनिया का ध्यान साउथ अफ्रीका पर था. ओके, Mandela expressed deep gratitude to these international leaders. For him, their presence showed that the world believed in South Africa's new beginning. He described this day as a celebration of freedom, justice, and human dignity. ठीक है. Mandela also reminded everyone that this victory did not come easily. It was made possible by thousands of brave men and women who fought against injustice. Some were jailed, some went into exile, and some even sacrificed their lives. यही लोग इस नई डेमोक्रेसी के असली हीरोज थे. Finally, Mandela said his dream of building a rainbow nation. Rainbow nation means जहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी के साथ ना हो. ठीक है, a country where people of every race live together with respect and equality. So this part of the chapter teaches us about Mandela's gratitude, his vision, and the long struggle that led to a new South Africa. Okay, now let's understand Mandela's ideas about responsibility and courage. Mandela tells us that every person has two big responsibilities. Okay, one towards their family and the other towards their community and nation. और ये दोनों फर्ज एक इंसान के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, बट अंडर अपार्थाइड मंडेला कुड नॉट फुलफिल बोथ. उस सिचुएशन में मंडेला दोनों में से कोई भी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाते हैं. टू फाइट फॉर जस्टिस ही हैड टू स्टे अवे फ्रॉम हिज फैमिली एंड स्पेंड मैनी इयर्स इन प्रिजन. ये उनकी सबसे बड़ी सेक्रीफाइस थी, अपनी आजादी को कुर्बान करके दूसरों की फ्रीडम के लिए लड़ना. ओके, आफ्टर दिस मंडेला एक्सप्लेन्स द रियल मीनिंग ऑफ करेज. ही सेज अ करेजियस पर्सन इज नॉट समवन हु नेवर फील्स fear but someone who conquers fear and moves forward to do the right thing. इसका मतलब ये है कि ब्रेवरी का मतलब डर को खत्म करना नहीं होता, डर पर जीत होती है. ठीक है, आगे देखते हैं. मंडेला ऑल्सो बिलीव दैट बोथ द ऑपरेशर एंड द ऑपरेस्ड नीड फ्रीडम. दोनों को फ्रीडम चाहिए. द ऑपरेस्ड लूज डिग्निटी एंड द ऑपरेसर लूजेस ह्यूमैनिटी. ओके, so true freedom must include everyone, not just one side. Finally, Mandela dreams of a country where people live with equality, harmony, and respect no matter their skin color. ठीक है, this beautiful vision becomes the foundation of a new democratic South Africa. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं. चैप्टर में क्या बोला जा रहा है, क्या कहना चाह रहा है इस चैप्टर में, इस चैप्टर के माध्यम से वो हम लोग समझ चुके हैं. तो अब हम लोग कैरेक्टर्स, थीम्स, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर देखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द मेन कैरेक्टर्स. मेन कैरेक्टर्स में नेल्सन मंडेला, लीडर ऑफ द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट एंड द फर्स्ट ब्लैक president. Okay, next is Thabo Mbeki and Mr. de Klerk, both sworn in
as deputy presidents. Next is the freedom fighters, जिन लोगों ने इक्वलिटी के लिए साल दर साल स्ट्रगल किया और कितनों ने अपनी जान भी गंवाई. ओके. एंड द अपार्थाइड रूलर्स, जिन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट किया. ओके. Now we will talk about the key themes of the chapter. Okay. Freedom and equality. Freedom belongs to everyone. सभी को freedom चाहिए, सबके लिए freedom जरूरी है. Okay. Struggle and sacrifice. Big change always needs effort. Okay. Courage. Courage means डर को जीत लेना ही असली courage, असली bravery होती है. Unity and nation building means एकता में बल है. Progress happens when people stand together. Okay. Human rights means dignity and justice for all. ठीक है. And here are some important word meanings. अपार्थाइड. अपार्थाइड यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम, नस्लीय भेदभाव. ओके. इनॉग्रेशन, जो समारोह को इनॉग्रेट किया जाता है, शपथ ग्रहण समारोह. ऑपरेशन, अत्याचार. लिबरेशन, मुक्ति, आजादी. डिग्निटी, सम्मान. ऑब्लिगेशन, कर्तव्य. रेजिलियंस, कठिनाइयों से उबरना. इगैलिटेरियन, समानता पर अधिकार. डिप्राइवेशन, वंचना, इट मीन्स वंचित करना. ओके. वंचित. करेज, बहादुरी. ठीक है. So this slide gives us a clear and quick overview of all the important points of the chapter. Okay. All right. Now we have come to the question answer section of this chapter. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि important question दिए गए हैं. But I am not going to read all of them one by one. Instead, I want you to revise these questions carefully. ठीक है. Total 14 questions है. 7 questions next slide में है. ठीक है. Because these are the type of questions that can be asked in your exam. Okay. These are in your books. For example, question 1 and 2 explain the inauguration ceremony and Mandela's promise. And the rest of the questions cover the systems of government, the role of leaders, the ideals for the new South Africa, and the meaning of courage. ये सारे points हमने already chapter में detail में समझ लिया है. ठीक है. So please make sure you go through each question and answer and revise the summary, themes and key ideas, because if you understand the chapter properly, you will be able to answer any question in the exam. So take some time, read this question and answers and be confident. आप किसी भी तरह का कोई भी questions आए, उसका आंसर बहुत अच्छे से आप दे पाएंगे. Okay. Now these are the remaining important questions from the chapter. यहाँ आपको next 7 questions मिलेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है. ठीक है. I am again not going to read each question and answer because we have already understood the chapter deeply. ठीक है. वैसे ये क्वेश्चंस कवर क्या करते हैं मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. मंडेलाज आइडिया ऑफ करेज, हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी एंड हाउ साउथ अफ्रीका चेंज्ड आफ्टर अपार्थाइड. ठीक है. ऑल दीज कंसेप्ट्स हमने चैप्टर में क्लियरली डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. सो नाउ योर जॉब इज सिंपली टू रिवाइज दिस क्वेश्चंस एंड चेक वेदर यू कैन आंसर देम इन योर ओन वर्ड्स. Okay. Remember, if your understanding is strong, you can answer any type of question in the exam confidently. So please go through all 14 questions from both slides, revise the summary, characters, themes and word meanings, and make sure your concepts are clear. Okay. So आज की वीडियो में बस इतना ही. Thank you so much for watching this video. If you found it helpful, please like, share and comment your thoughts in the comment box. See you in the next video. Keep learning, keep growing.